ಹರಯೇ ನಮಃ ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪ ಚರಣಂ ನಾರಾಯಣಾಗಿಲ ಗುರು ಭಗವನ್ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ವತ್ರ ಗೋವಿಂದನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ದಶಕಂ 7 ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಉತ್ಪತ್ತಿ. एवं देवचतुर्दशात्मकजगद्रूपेण जातः पुनः तस्योत्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि तादा स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्यजीवात्मकं यो भूस्फीदरजो विकारविकसन् नानासिसृक्षारसः सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्भाष्यमाणः स्वयं बोधं कल्पनवाभ्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्तिवान् तावद्वं जगतां पतेत बदभेत् एवं हि वैहायसी वाणी मे नमशिश्रवश्रुतिसुखां गुर्वं स्तभक् प्रेरणाम् गोसौ मामवदद्भुमानिति जला पूर्णे जगन्मण्डले दिक्षु द्वीक्ष किमभ्यनीक्षितवता व्याख्यार्थमुद्पश्यता दिव्यं हर्षसहस्रमात तपसा देनत्वमारातितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते पादे जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसात्वसमुखाः भावास्तु दूरङ्गदाः सान्द्रानन्तझरी च यत्र परमज्योतिर्प्रकाशात्मके तत्ते धामविभावितं विजयते वैकुण्ठरूपं विभो यस्मिन्नाम स दुर्भुजा हरिमणि श्यामावदादत्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तदाभिधोन्नतपथा दीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते तामनिरस्त सर्वशमलं वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादनहृत्यकात्रलतया विद्योधिदाशान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुकाल् लक्ष्मीः स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवां तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपते रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोडिलसत्किरीटकडगात्याकल्प दीप्राकृति श्रीवत्साङ्गितमातकौस्तुभमणि छायारुणं कारणं विश्वेषां दवरूपमैक्षतविधिः तत्ते विभो पादु मे कालाम्बोधकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्तहसित स्यन्तप्रसन्नाननं राजत्कम्बुकतारिपङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलं स्रष्टुस्दुष्टिकरं बभुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासये दृष्ट्वा सम्प्रमकमलभूः त्वत्पादपादोरुहे हर्षावेशवशं वदो निपतितः प्रीत्या हृदार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय त्वयिदाद्वैतभवस्वरूपपरमिति आचष्टत्वं द्वां भजे आदाम्रे चरणे विनम्रमदतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते बविधानसर्गविधिभिः बन्तोऽभिसञ्चायते इत्यापाश्यकिरं प्रदोषनितरां तच्चित्तकूटस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयक्ष भगवन् उल्लासयोल्लागदाम् श्रीडे नमः गुरुवायूरप्प चरणं नारायणागिल गुरो भगवन्नमस्ते
सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।